जानवी इधर सेंटर आपका ध्यान किधर है? मैं इधर है इधर जानू वो तो फिर जानवी लुक इधर लुक इधर लुक इधर थैंक यू जानवी जी लुक गया सामने जानवी लुक गया जानवी सामने Strand of Silk, it's amazing. The wonderful Neha, who couldn't be here today. Neha Kakkad needs no introduction. And of course, Shashwat, you're also part of the vocals of the track. I can't not take Kumar Sahab's name, who's penned the wonderful lyrics. So please give him a round of applause. And let me just say that I think that you guys are lying to us. This is not a straight up club number. It's definitely not. And you will tell me the secret about this. Okay, so Danshu is looking bye. So let me just get the wonderful spy herself. I don't know if she's a spy. I don't know anything right now. So let me just get her on stage. The wonderful Janhvi Kapoor playing Suhana Bhatia. Would you please join us? How are you? You're looking the part, I must say. Every time I see Janhvi out on promotions, can we give her a round of applause for just committing to the damn part and dressing like it? You look like you could be a diplomat right now, ma'am. Thank you. All right, let's start off by asking you a little bit about Suhana Bhatia. This song doesn't look like it's just a club number. Is there more to it? What can you tell us? I think, like you could tell from seeing the trailer as well, there's more than what meets the eye in every aspect of this film. I think Ulaj is definitely, when I heard the script, it definitely wasn't what I expected at all. And I think जब आप सब 2 अगस्त को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके हमारी प्यारी सी फिल्म को देखेंगे, आप सबको भी लगेगा कि अरे ये तो जो हमने सोचा था वो बिल्कुल नहीं है. And hopefully you all will be very thrilled and entertained and excited by what we've worked so hard to make. I can't wait for it. 2nd of August is the date. I remember a couple of days ago we interviewed and you told me that it's not just a professional relationship with your director, that is Sudhanshu. He's also contributed to a little bit more in your life. So would you like to tell our friends, they're all friends here, what has that equation been between the two of you? You know, I think not just Sudhanshu, but everyone at Jungli, मैं I think उलझ से पहले 5-6 फिल्में कर चुकी हूँ, बट जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है उलझ में, जिस तरह से हर मोड पर, I'm sorry you keep asking me in English and I keep answering in Hindi, but basically what I'm trying to say is No, it's fine. I think English Hindi दोनों सही है आपके लिए. हिंदी बेहतर है आपके लिए, तो हम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे. Okay, great. नहीं, हर मोड पर इनफैक्ट सुधांशु और जंगली की पूरी टीम मुझे इनकरेज बढ़ावा देती रहती थी कि प्लीज़ आपके ओपिनियंस क्या है, आपको क्या लगता है, इन्वॉल्व रहिए. इस हद तक कि मुझे शायद लगता है कि उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया, काफ़ी स्पॉइल कर लिया है, क्योंकि अभी मैं मेरे आवाज़ को शायद ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ. पूरे टीम को, अमृता यहाँ बैठी है हमारी प्रोड्यूसर, बहुत तंग किया है मैंने सबको. बट बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको ऐसे लगता है कि आप ऐसी टीम में शामिल हो जो कि हर इंसान की आवाज़ को सुनना चाहता है, बढ़ावा देता है. And I think the credit for that goes completely to, of course, the captain of our ship, but also everyone at Jungli for, I think, empowering all of us so much. And as a woman, that felt great to be so heard creatively.
yeah, and be a part of everything. I think it's a wonderful thing. Thank you for sharing that. Trust me, this couldn't have been a rehearsed answer. I know that for sure. But the one thing that we've been rehearsing has been this shotgun step. I'm so sorry, Janvi, but you make it seem so easy, all right? I tried. I've kind of slipped my hip, so I'm not going to do that again. But hey, for everybody here, would you be kind enough कि आप हमें थोड़ा सा ये shotgun वाला step दिखा दें? Yeah, that'll be so great. Guys, do we want that? Yes, we do. I'll take that mic away from you. We'll play that music for you. And yes. I don't want to do it alone. मीडिया से मेरे कोई दोस्त यहाँ है, मनोज जी, अरबाज जी, क्या आप बात लोग सब है? स्टेज पे आए, मैं अकेले नहीं करने. Wow. क्यों अकेले क्यों मेरा मजाक उड़ाऊं मैं आप लोगों के साथ? आइए स्टेज. मनोज जी आपके साथ तो 100%. मनोज जी. क्या अपने सीट पे नीचे जाते ही रह रहे. आप सब आइए. Whoever wants to come on stage and dance, come. अजय जी है कहाँ? दिख नहीं रहे, फोन के पीछे छुप गए. नहीं अजय जी चलिए, मनोज जी आइए. आप तो आइए जाइए. हाय कम आइए अजय जी. Thank you. Hi. Nice to meet you. सब आ गए? Nice to meet you. मनोज जी. मनोज जी सेंटर स्टेज प्लीज. आप क्या इतना हंस रहे? आप सबको भी आना है. अजय जी आइए. नहीं अजय जी आइए. हर बात सुनती हूँ मैं, अच्छे से पोज करती हूँ हर बार आपके लिए. अजय जी आपको तो आना ही पड़ेगा. How lovely. That is looking like a full house on stage. चलिए. मनोज जी आगे ही खड़े रहेंगे. देखिए अब जानवी ये स्टेप करके दिखाएंगी और बाकी के जो हमारे दोस्त हैं वो उनके साथ ये स्टेप करने की कोशिश करेंगे. कोई जज नहीं कर रहा. देखिए अजय जी के सामने एक बच्ची खड़ी है, उनको रहने दीजिए. All right, let's hit the music. क्या बात है? यार it has to be. मनोज जी अजय जी भाग गए. चलिए let's try and do it once again, one more time. बहुत बढ़िया आ जाइए. बहुत बढ़िया, थैंक यू.